Hello and welcome everyone. Are you able to see me? Namaste and thank you for your patience. Happy Women's Day to everyone. मेरा नाम Manisha Chandra है. I am a lifestyle and wellness coach, a pregnancy specialist and a faculty with the Art of Living. I would like to welcome Bhairavi Shah, who has organized today's International Women's Day special called Discover Yourself. We have a wonderful line. Welcoming Bhairavi ji. Bhairavi ji, can you switch on your video? Yes. Smile, Bhairavi ji, you're looking very nice. Okay. So, are you able to speak? Hello, beautiful people out there. Welcoming Bhairavi ji. Bhairavi ji, can you switch on your video? Yes, my video is on. Can you hear me? Can you hear me? We can hear you. Yes, okay. Smile, Bhairavi ji, you're looking very nice. Thank you so much. Okay. Yes. Are you able to speak? Yes. Hello, beautiful people out there. Welcoming Bhairavi ji. Bhairavi ji, can you switch on your video? Yes, my video is on. Can you hear me? Can you people hear me? Yes. A very warm welcome to all of you, and thank you for your patience. We've been to come over some technical glitches, being novice in this. So I welcome Smita ji to start the session. Thank you so much. Smita ji, I'm unable to find you here. I want to unmute you. Are you able to unmute yourself? Okay, I think yes. Hello, wonderful, beautiful ladies out there on this wonderful day of Women's International Day. A big clap for you and joining us today. Thank you so much. Thank you so much for the patience. We've had some technical glitches. You will have to bear with us. We are still learning. So that's it. And we celebrate this Women's Day every year on this 8th of March. And it's called the International Women's Day. And why do we do that? To celebrate the womanhood, to celebrate the female energy, to celebrate the feminine. And who else than such beautiful ladies and people who have joined us today to support us in this work. I can see a lot of beautiful faces here, and there are others who can't see, but they all are there to support us in this field. And we are here to support your energy, your job, your work, what you have done. It's a small effort on our part to be a part of this. And we are all coaches here, and a small effort for the coaches to become a part of, it's a part of a small effort on the coaches to help people being aware of what kind of work we are doing. So when we say coaches, what is coaching? We've always had coaching in our lives, you know, like when we were living together as a family, as a joint family, one of us, maybe the grandmother or the grandfather or sub-sibling, somebody would be helping us, coaching in our day-to-day activities, in our lives. If we had a problem, we could go and talk to them. But because of the migration, because we decided to move out for our jobs, we normally are now nuclear families. We live away from our parents, from our grandparents, from families, and are living our life on our own way. So these coaches are here to bridge the gap. They help you to understand what could be missing.
Maybe you will like the energy. You're going to understand what the coaching is all about as I introduce all my guests to you. So today, it's a wonderful beginning we are going to make with the women who talks about money. Money is a very important part in our lives, and it's a very important part of our journey. So I would like to welcome Smita. She's a financial coach and a money matter coach. And she worked as a bank manager in the nationalized bank for many, many years. She's a UK designer and VF artist by passion. And our mission is to help 1 million women. Hello, friends, listen to this. 1 million women become financially aware and independent so they can lead a balanced life, a free life with self-confidence and self-esteem. She's a nature lover and a wife, she says very proudly, of a loving and a supporting husband. Please welcome Smita. Thank you, Sunita ji, for this wonderful welcome. Hello, beautiful powered women out here, not wasting any single minute. Allow me to ask you one question. Don't you think today is a high time to normalize women talking about money? क्या आपको embarrassment होता है, गुस्सा आता है जब someone around you tells you, अरे why are you putting your nose into this? तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो. क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? Do you really want to know this? So quickly, I will explain 3 main problems we women are facing generally. Take out your pen and paper and start making notes, right? Number 1 is money mindset. 80% of the problem in this is your money mindset. Now, what is this money mindset? Money mindset मतलब हमारे सदियों से चले आ रहे myth कि money हर बुराई की जड़ है, right? We used to say that, right? Good people do not have money. पैसा जरूरी नहीं होता. हाँ, प्यार जरूरी होता है, पैसा जरूरी नहीं होता. अपना चादर देख के पैर फैलाना चाहिए, right? क्या हम अपना चादर बड़ा नहीं कर सकते? Is it really कि हम अपना चादर बड़ा नहीं कर सकते? Here with us we have 3 categories of women, right? One is housewives, second is working women, and third is financially sound women, right? तो हाउसवाइफ को लगता है कि मेरी सारे कुछ नीड्स फुलफिल्ड है, मुझे पैसे से क्या करना है. और जो हाउसवाइफ हैं जिनको लगता है कि नहीं, आई वांट टू अर्न, दे थिंक दैट आई एम लैकिंग इन स्किल पार्ट, राइट? क्योंकि उनको स्किल की कमी लगती है अपने में. द सेकेंड इज वर्किंग वुमेन, द सेकेंड इज वर्किंग वुमेन. उनका क्या मिथ होता है? उनका मिथ होता है बहुत से बहुत 5 लाख रुपए कमा लिए ना महीना में, बहुत हो गया मेरे लिए, बस बस बस, राइट? सो दे डोंट ड्रीम बिग, है ना? एंड फाइनेंशियली साउंड पीपल के लिए क्या होता है? मुझे पैसे से क्या लेना देना, आई हैव एवरीथिंग, आई डोंट वांट एनी मोर, राइट? दीज ऑल आर मनी ब्लॉकेज विथ यू, which block your money coming into your life. एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लो, 100% अंदर तक डाइजेस्ट कर लो, घोल के पी जाओ. मनी की कोई एनर्जी नहीं होती, राइट? मनी की कोई एनर्जी नहीं होती. मनी इज अ नॉन लिविंग थिंग, है ना? Is this a breakthrough for you all? Right? Money is a non-living thing. It amplifies whoever it belongs to. So change your limiting belief and stop disowning your power just because you don't understand the financial chaos or financial jargon. It doesn't mean you can't manage it. You can learn it. And here comes the second problem: lack of skill or knowledge about finance, that is money management, है ना? And the third is how to monetize your skills, right? How to talk about how to take your knowledge on the platform where you can make money,
right? Implementation part, making money part, है ना? So here we are going to talk about money management, making you financially sound, aware, right? You can make money अगर आपका mindset ठीक है, आपके पास skill है, तो आप money कभी भी क्रिएट कर सकते हो, कितना भी क्रिएट कर सकते हो. अगर आपके पास स्किल नहीं है तो टुडे देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म जहां पे आप स्किल डेवलप कर सकते हो एंड देन यू कैन अर्न मनी. बट ऑल्दो यू हैव ऑल द मनी विथ यू, इफ यू आर नॉट managing it right, it is going to give you zero return. You will be back to zero, right? Is it so? Yeah. So ladies, nothing is stopping you. Understand this. Nothing is stopping you. Only who can stop you is you, right? So here I will take you to solve this money management problem, all money management problem, and it's very easy. यहाँ एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए. क्या आपको लगता है आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, आप अकाउंट्स में अच्छे नहीं हो, तो आप यू कांट हैंडल फाइनेंस बेटर? It's a myth. It's a myth. I in my school days have zero maths talent. My maths was very poor. Still, I end up as a bank manager, managing money of lots of people alone, right? So it's not a rocket science. We women are divas, right? Lakshmi Mata. She's a woman, right? We can manage money very beautifully and better than anyone, right? Because हमारे खून में ही जुगाड़ है ना? हम अपने फैमिली जॉब और डेली क्योर्स के साथ पूरे दुनिया को मैनेज कर रहे हैं और कर सकते हैं, right? Even there is a crack in you, you are whole, right? You agree? So you will get immense benefit by becoming money managers. And the first thing you can get an idea that people fail. System don't fail. System never fail. You are having a set system of managing money. It will never fail. ना तो COVID situation में, ना demonetization में, right? So the second benefit you will get to know how to multiply your money, how to make money out of money, right? And the third benefit you can get will be in you. You will be more power and radiant. You will be amazed by discovering your true power and living your dream life. है ना? Now there comes a question. अरे यार सब कुछ जान लिया, समझ गई मैं, लेकिन अब इसको implement कैसे करें? How to become money manager? So I am going to give you 2 hacks right now. The first hack I am going to give you is continuously educating yourself in finance. Stop limiting yourself by saying you don't get it, right? You can get it, okay? And the second hack is dividing your income and opening different accounts for different needs. कितने लोग हैं यहाँ पे जो अभी भी कैश में डील करते हैंगे? 100% मुझे यकीन है डेली के डेली 100 रुपीज आपके ड्रॉर में तो जरूर रहता होगा आपके घर में, है ना? तो आप मुझे एक बात बताओ, 100 रुपीज जो आज आपके ड्रॉर में है, क्या वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद 200 रुपए बन सकता है? 120 रुपए बन सकता है? 110 रुपए बन सकता है? नहीं, वो 100 रुपीज ही रहेगा. सो नाउ फॉर दैट रीजन यू बेसिक चीज है कि यू नीड to open basic saving account, right? Basic saving account. Now if you have certain income, तो आप उसको systematically divide कर सकते हो according to your need. ठीक है? First you should keep 20% of your income as an emergency fund, as a liquid fund. And how you can do it? How you can do it? 20% of your income you can
create in this category, you have three things. Okay, SB account, that is saving accounts. You can get 3 to 3.5% interest in that. Okay, and then if you want to meet the small goals, like आपको एक कभी फ्रिज खरीदना हुआ, या तो कभी आपको कार ही खरीदना हुआ, या कभी घर खरीदना हुआ, तो आप एक आरडी क्रिएट कर सकते हो बैंक अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट, जो हर महीने 500 रुपए से लेके 10,000 तक आप आरडी क्रिएट कर सकते हो. इफ यू वांट टू क्रिएट अ इमरजेंसी फंड लाइक 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा, यू कैन कीप एफडी विथ बैंक्स, राइट. फिक्स डिपॉजिट, जो कभी भी आप चाहो आप निकाल सकते हो, कभी भी आप चाहो आप यूज कर सकते हो. एंड वन थिंग विच इज वेरी मस्ट, वेरी मस्ट, एंड it's non-negotiable, is taking your health insurance, right? In nowadays, you must have a health insurance and a life insurance. If you are on budget, then just go and buy Pradhan Mantri Bima Yojana. It's just of 330 rupees per year. And we are also having Suraksha Bima Yojana, right? And the 10% of your income you should invest. Invest where you can invest in SIP, systematically investment plan, right? In mutual funds, in mutual funds, and in flexi pay and shares also. You can open a basic demat account and you can trade, right? So 10% you can give to charity, and 20% in your self growth and learning, right? You can give 20% ratio, you can manage whatever your budget allows, ratio you can manage, and 40% in daily expenses or household need. Okay, now here it is. Now I have bonus for you. These all things you can manage by some app. So today I will give you 3 apps, right? The first app is mint.com. It is intuitive platform by QuickBooks. Here you can link your account. आप अपना लिंक अकाउंट कर सकते हो, अकाउंट लिंक कर सकते हो, और आप शेड्यूल कर सकते हो कि कौन से अकाउंट में आपको कितना डालना है एंड कौन सा अकाउंट आपका किस पर्पस के लिए है, राइट? और कितना कितना आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. एवरीथिंग यू कैन ट्रैक ओवर हियर. And the second beautiful app is Penny. Penny क्या करता है? हम लोग आजकल मैक्सिमम चीज ऑनलाइन मंगाते हैं. मैं तो ग्रोसरीज भी ऑनलाइन ही मंगाती हूँ. स्विगी से आप हर दिन कुछ ना कुछ डिमांड आ जाता है, घर में आप मंगाते हो. अगर पेनी ऐप में क्या होता है, अगर आप 67 रुपीज का कुछ सामान मंगाए तो वो राउंड अबाउट करता है 70 रुपीज में. Okay, and the rest 3 rupees is automatically invested in the share market. Okay, and that you can connect with your bank account. You can Google it and know more about it, right? And the third app I want to give you is Grow. Grow is a very beautiful app. It's free also. You can open a demat account over there and start trading, and or you can open SIP, or you can just open mutual fund. कुछ भी आप वहां पे open करके देख सकते हो. Now, isn't it amazing? आपको कुछ insightful लगा है ना? So today I have one task for everyone. Everyone should 100% do this whenever they feel कि उनको मनी की प्रॉब्लम हो रही है या उनको कुछ मनी ब्लॉकेज हो रहा है. तो एक एफर्मेशन आपको करना चाहिए, जो कि है I am ready to create my own story of abundance with money. Money loves me and I love money, right? I am loving how easily it has started to come towards me. This is the affirmation statement. You can rewind it and you can see this statement. You can hear this statement again later. बट ये जो एफर्मेशन है मनी का, ये आपको जरूर करना चाहिए, बिकॉज ये आपको आगे मनी मैग्नेट बना सकता है, राइट? So thank you. This ends my time of speaking. So thank you, Sunita ji, for giving me such a opportunity to speak on this platform, and Bhairavi ji to give me opportunity to speak on financial literacy for women.
So we will get back to Sunita ji. Yeah, Sunita ji. We can't hear. Hello, can you hear me? Okay. So thank you, Smita, for this wonderful knowledge जो आपने हमें फाइनेंस की बताई. आपने बताया ही नहीं, मतलब काफी अच्छे से हमें घोट के पीने के लिए भी बोला है, which I think हम लोगों को सबको करना ही है, because the information that you share is very important. I believe कि financial independence बहुत ज्यादा जरूरत होती है सबको. If you feel freedom, if you need the freedom, और हम चाहते हैं कि हम अपने जिंदगी के फैसले खुद से करें, so that is very important. So Smita, you've been great information. Thank you so much for this input. Loved it. Thank you. Now we have a wonderful speaker. Next, मेरा जो guest है, it's such a wonderful person, V.S. Vimalasree, and she's a relationship and coach and an author. She likes to talk about pre-marital counseling. She's going to give us guidance on the pre-marital counseling today. And she's a certified NLP expert, a life coach, and she's an author of a book, Secrets of Successful Self-Mastery. Wow. And her mission is that she would like to assist young people to have a deeper knowledge of their lives and mindset before embarking on the wonderful adventure of marriage. I think she's going to share some beautiful things for us. So please welcome Vimalasree. Vimalasree, please. Thank you, Sunita ji. Happy Women's Day to all the beautiful women present here. And it's nice that I want to thank Bhairavi ji for organizing such a wonderful event where I get to share my ideas. See, this comes to me whenever we see that someone is going to get married. People always talk. This is only from the girl's perspective, okay? There's also the other side which we completely forget. We don't think about. There's also a man's perspective attached to marriage. But often it is not spotlighted or not given so much importance. But however, today we will speak about only the women's perspective. And so what happens is when a girl is about to enter this marriage, we all say, okay, you go to the parlor, you get this photo shoot done, you go for the pre-marriage shoot, you do this, you do that, you check your makeup, you check your costume, all this happens. But nobody teaches that there's something more important. All these things are important, of course, but it is only for that one day show. To keep this going beautifully, you need something else. That is a mindset. The mindset before entering the relationship. No one teaches us. Of course, all the women, married women sitting over here will be able to correlate this. I mean, had this happened sometime back, or was I informed about these things before marriage, I would be alert. I would have not done this mistake, or I would have known how to handle things better. And most often it has happened with us that after entering marriage, you marry the person. It may be a love or an arranged marriage. It's very nice. All that romantic, filmy, fairy tale wedding and all that happens. But the reality takes a twist and turn when you actually, the knot is tied and you start living with the person every single day. There is a lot of difference and you will get to see a different person. But the person has a person changed? No, the person has not changed. It is just that we have started living 24/7 with this person, and you start exploring different perspectives of this person, how he behaves to different things. Of course, there are a lot of challenges, responsibilities attached, and expectations from a daughter-in-law. And of course, the girl also has expectations from the family where she's from the husband and all that. Most of the time, it's nice and a very beautiful. It's like a romantic song when you're in love and all that. You can hardly see any of this. But actually, after the knot is tied and you start living, these things start popping up one by one. And starts right from the communication. You say something and he understands. Now you are not able to understand me. You catch up with all these fights. Small arguments come up.
then it becomes a reason for fight. And most of the cases, it even ends up no, to a bad thing where they have to end up the relationship. Did we not love the person? Does he not love? It's not about that. It's just that we are not getting our basics and the mindset right before entering into relationship. Of course, our previous generations have survived all this, but there are two categories over there also. Either you're taking everything what is, you're given the responsibility of do this, and you have done it, or you agitate and come out of it. These are the broadly two categories. Now, what happens is setting expectations and meeting them is happening. Now, this thing happens when you are not on the same page with your spouse. You have to have that understanding. All these problems start popping up after marriage. We don't see it before it. Of course, you will know what would you think before marriage, what experience. See, it is like you are standing on the pool side and watching people swim. Okay, you have seen your parents swim, you have seen your friends swim and all that. But have you ever been there? Only if you fall into the drop into the water and start swimming, you know what is the difficulties you are facing. So this marriage pre-marital counseling will give you tools, tips, and tricks like how you can handle these better. I don't say you will not have problems at all if you take up marital counseling before. And once you have taken up, okay, now you're ready, you are like a shield, nothing will happen. I don't say that. You will, of course, every day have to face challenges. It comes in different size, shapes, and colors from different people. But just that, you will be prepared and you will know better how to handle it without hurting yourself and others. See, there's a beautiful transition. When the girl gets married and goes to the husband's house, she is like a guest. And then she has to become a part of the family. Of course, you love and all that. That part is there. But what happens is the family also has to accept. You need to adopt to what they are, their cultures, their customs or whatever. And they need to get used to what your habits, your behavior. So there's a lot of thing going on there. There's a big transition happening. And this transition has to happen smoothly. And if that doesn't, for some it takes a couple of years. For some it takes, I don't know how, some get it quickly. And it depends on all the various factors. So when we are mentally prepared, what happens is you are able to make that transition in a very smooth and a better way that you don't hurt yourself and you don't hurt others also. So we're getting on the mindset and awareness. Like I told you, in the swimming pool, we see others swimming, but we don't. And now with this counseling and this right mindset, it is like the coach informing you beforehand. See, these are the problems. You might not be able to hold the breath there. Don't go to that 9 feet deep area. You stay here for some time, get practice and then go. So this is the kind of things you will know better how to handle it. And it is very important to understand and respect each other's value in this relationship. Falling in love, chemical attraction, all that is fine. But what will stay for long is the values and belief system. You need to understand your spouse's values and belief system, and that will help. Like, see, there are people with 6 different pre-installed psychological needs. When I say technically, it is certainty. Some people would like a very secured, safe lifestyle. Some want variety. They want to travel. They want to explore. Some want significance. Like they would say, oh, yeah, she did it. They want that. But usually we use an alternate term to the significance. We say, they're not recognizing me. This becomes a problem. So someone is looking for recognition. It can be both. So you should understand what your partner needs. And this will help make it a very smooth sailing. This will also help you in avoiding conflicts, because you know the other person's values and what they are looking at, how they will look at things and all that. And building intimacy and growing together, which is a very important part of marriage. Otherwise, you could just be friends.
and it builds a better and stronger relationship. Now, the takeaway for today, what I would like to tell all the women sitting here is, please don't treat marriage like a business agreement. I give this, you give this, I do this, you do this. Of course, you can say that, but the mindset with which you say is important. You cannot go ahead and say, I am earning, you are earning, so I do this, you do this. That is not right. You can share the work, you can share the expenses, you can share the workload in the house, everything. But the mindset has to be that it should come out of understanding and not out of agreement, like how you do it in business. And to be very fair, I would say that no marriage is like the fairy tale story that happens only in pictures. Please don't be taken away by this, the Hollywood and the Bollywood movies, where after marriage everything is very beautiful and all that. That doesn't happen. Every day there are challenges, but just with the right mindset, we will be able to face it in a better way. And please give time and patience to your relationship. This one thing I would like to tell all the young people over here, because most now it is it's the time of fast food, and the is not even the YouTube videos, but the Insta and the shorts. They want everything quick like that. But please don't do that with your marriage, because it's not the fan or the light or your thing. You're putting it on and immediately it glows. You put it off, it doesn't go. Life is not like that, and marriage is a very beautiful relationship which you need to cherish for long and grow with that relationship and enjoy it. Thank you for the opportunity. And thank you, Vimla, for such wonderful words. Marriage is a beautiful relationship. Wow, that's very true. And we all have experienced this and are experiencing. And for all the young girls who are looking, for marriage, I love the way she said, when you book a beautician, also book a marriage counselor, please, because that is the need, and it helps us to understand what are we going to see in the future. So thank you, Vimla, for such wonderful guidance. It's been a pleasure to have you. Thank you so much. thank you. And the next guest today is a wonderful person, Manisha Chandra. Ladies, she's a pregnancy and a wellness coach, a wonderful person. And her main thing is she prepares you for pregnancy, Garbhsanskar. And she's a faculty with the Art of Living for more than 12 years. She's a certified pregnancy and a wellness coach, a co-founder of the Sari Story. So here I'm wearing a sari for you, Manisha. And as she says, she's an environmentalist and a blogger and a yoga enthusiast. Lovely. Ladies and gentlemen, please welcome Manisha today. Thank you. Manisha, please. I think we have to unmute Manisha. Can you hear me now? Yes, Manisha. Thank you, Ruchi. That means a lot. So, आज विमेंस डे है, हर किसी को सेलिब्रेट तो करना ही है, तो आज हमारी टेक्निकल टीम भी थोड़ा विमेंस डे सेलिब्रेट कर रही है. So, we are having a lot of fun over here, and like my esteemed colleagues have already said, Smita ji spoke about the importance of finances, and then Vimla so beautifully said that marriage is a partnership, it's not a business agreement, and ये दोनों बहुत important prerequisites हैं pregnant होने के लिए. Well, like everybody likes to joke, you don't really need to be married to get pregnant, but it helps. Well, so what really is a pregnancy? Everybody knows that it's a gift that only women can get pregnant, and so on and so forth. I think we can't hear you, Manisha. Maybe थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, and let us just really think about what pregnancy is. It is probably going to be the most beautiful experience of your life ever, and it needs the time, the kind of patience, planning, and commitment. Because जैसे हम कहते हैं कि अगर आप मेथी का दाना डालते हो तो तुरंत आ जाता है, लेकिन a bamboo shoot takes
years to show up, but it remains also for a long time. उसी तरह pregnancy, getting pregnant, having a child, it's not like popping a pill, or like Vimla used a beautiful example कि instant नहीं है कि आपने switch on किया और light आ गई. बहुत कुछ जाता है in having a good pregnancy. In fact, there are ladies who come and tell me that, Manisha, it's so unfair that there are women on the street and उनके बच्चे, like they have 2-3 अच्छे healthy बच्चे. So there seems to be. All I tell them is have patience. When the time is right, it will happen. Now, what are some of the things you should be prepared for before being pregnant, before getting pregnant? I'm just going to share my screen. Once you get pregnant and once you have the child, for a long time, maybe, practically speaking, almost for a year and a half, 2 years, you may need a lot of support, physical support, emotional support, financial support. Isliye don't rush into pregnancy. Ensure you have a strong support system. Many a times I have seen that couples either don't want to get pregnant, they don't want children because they want to enjoy life, or there is a problem in the marriage and सब कोई कहते हैं कि बच्चा होने दो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बच्चा कोई बैंडेड on a strong footing, and that you have enough support from your family. The other thing is, like a lot of couples nowadays, and especially working women, say, we don't want to get pregnant. I have just one thing to tell. I mean, it's an opinion. Definitely, I respect your opinion. But जैसे हम जब छोटे होते हैं और हमें पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, we are like, I don't want to study. I would rather play. Let's have fun. And then जब समय बीत जाता है, फिर regret होता है, I wish I had studied. So don't let this be a decision of regret. If you want to consciously get into a no-child marriage or a no-child partnership, it's a very important decision, one that you should not regret later. So do think about it. Again, like I said, you will need help because physically आप ज़्यादा move नहीं कर पाते हो. The child will have its demands. आप weak times. तो माउंटेनियरिंग में जितनी एनर्जी, जितने न्यूट्रिएंट्स, जितना ऑक्सीजन लगता है आपके बॉडी को, उसका 1.5 गुना ज्यादा तो आप सिर्फ बैठे बैठे just being pregnant, you're using that much of energy. So your bones get depleted. All your blood is सींच रहा है उस बच्चे को. तो अपने आप को भी समय दे. Pre-pregnancy finances के बारे में I think Smita has spoken very well, so I won't really get into that. A wellness plan is very important. देखिए प्री कंसेप्शन में भी आयुर्वेद में शरीर शुद्धिकरण होता है, जिसमें दोनों the father and the mother, they undergo a rigorous process. So 3 months to 6 months, please do consult an Ayurvedic where they do a शरीर शुद्धिकरण, because बहुत सारे आजकल जो हम देखते हैं कि congenital defects होते हैं बच्चों में, they have various kind of issues. ये सब बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है. हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं, इट्स नॉट रियली गुड. देयर इज सो मच ऑफ इमोशनल बैगेज, स्ट्रेस. Strong pregnancy. The other thing is you should ensure that you are eating well and you're eating right. आपके अच्छे लाइफस्टाइल के हैबिट्स अभी आपको काम आएंगे. Many women, once they get pregnant, they want to do yoga so that they get back into shape and all of that, but it won't help. आपको पता है प्रेगनेंसी के पहले 4-5 महीने तो कोई भी योगा इंस्ट्रक्टर आपको योगासन नहीं कराएगा, बिकॉज प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होनी जरूरी है.
So the first 4-5 months, you're not even allowed to do proper asanas unless you have been a very strong yoga practitioner from the beginning. So when you're pregnant is not the time to start your fitness journey. It has to be before that. Another thing is many women are worried कि once I've had the child, so I will lose my figure, पेट बाहर निकल आता है. ये इसलिए क्योंकि we have forgotten the old midwife practices, जहाँ पे abdominal binding होती थी, मालिश होता था, स्टीम लिया जाता था, हर्बल स्टीम our so-called education when it comes to a postnatal wellness plan. So do educate yourself about all of this. Ensure you have the right resources. See, I'm a pregnancy yoga specialist. I cannot leave without talking about Garbhsanskar. Garbhsanskar is such a beautiful concept. And I really appreciate the way it's part of our Vedic lifestyle. It's been practiced for millennia in India. It's still available. अभी भी हमारे नानी दादी के पास ये knowledge है. Otherwise, there are some wonderful books available on it. So again, my suggestion is, know a little about Garbhsanskar before you get pregnant, so that you know what to expect, what not to. The basic premise of Garbhsanskar is before you even get a child, and here the mother's role is very important. Of course, the father's role is also important, but the mother's role is so important because आप इतने सूक्ष्म लेवल पे अपने बच्चे I want to be born in this family. बहुत सारे permutations, combinations के बाद एक बच्चा आता है. And this answers my earlier question, जहाँ पे कि रास्ते में कोई गरीब सी फैमिली और उनको बच्चे हो रहे हैं, और यहाँ पे हम अच्छे कर्म लेके बैठे हुए और हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं. अरे इतने अच्छे कर्म लेके बैठे तो उतने अच्छे सोल को भी तो तैयार होना है आपके पास आने के लिए. So it is just taking its time. It's waiting for the right way the stars align, the right way. Maybe it is waiting for you to take care of certain things at your end, detox your body. Maybe there's some. So the soul knows a lot. And एक छोटा सा tidbit fact share करती हूँ. कहते हैं when you have a good soul, how does it help your pregnancy? जब आप chanting करते हैं, हम whichever divine power you believe in, whichever religion you belong to, when you are believing in God, जब इस तरह की आपकी mindset होती है, वैसा ही divine soul आपके पास the time they are at the womb. Pregnancies are easier. Delivery is comparatively easier. And even after being born, the child has so many good qualities. इतने divine qualities होते हैं उनमें. I know Bhairavi ji was telling me कि I know of mothers जो pregnancy में Vedic maths के class में enroll कर रहे हैं, and छोटे बच्चे को 2 महीने से phonetics सिखा रहे हैं. No, this is not pregnancy and parenting. आप बस अपने जड़ को तैयार कर लीजिए. Everything else the child will do. They come with their own karmic, पूरा लिखा हुआ लिखित आता है. आप सिर्फ ये ensure करें कि जो आपको the womb that you're offering to them is the best possible. Take care of your health, physically, emotionally, mentally, spiritually. तैयार रहें, and trust me, only the best will happen to you. And pregnancy is a journey of a lifetime. Take time to enjoy it. Don't rush through it. Thank you so much for your time. I love being. Thank you, Manisha ji, for such wonderful knowledge and information she shared with us. Garbhsanskar, आप बच्चे के होने से पहले अपने आप को तैयार करें. कैसे करना है उन्होंने हमें थोड़ा सा संक्षेप में बताया है in a very small way. But if you would like to know more, all the young mothers and unwed girls and who wants to have children, the newlyweds couples, please you can get in touch with her. She has a lot of knowledge. बहुत information है, बहुत knowledge है उनको, और ये इनका passion है. She's doing it out of passion. So, and you can see that when she speaks with it. So thank you so much, Manisha, for such wonderful knowledge and information. Thank you.
Now, the next speaker that we have is a wonderful person and somebody who made this possible today, Bhairavi Shah. We all know her for what she is. She's a parenting coach and an author. And she's here to tell us some couple goals about parenting. Parenting is not only mother or not only father, it is as a couple together. She's a life coach and an NLP expert. And she's an author of a wonderful book called Parenting. It's easy if you do it smart. She believes in complementing each other to live a fulfilling life and creating impact to give a child a bigger and a brighter future. So all the ladies, Bhairavi for you, Bhairavi Shah. I'm so sorry, I'm unable to locate Bhairavi ji here. Is she in the meeting? Yeah, she's come now. Thank you, Smita ji. Bhairavi ji, over to you. Yes, thank you so much. And today, even electricity has been playing parts with me. I've been in and out of the meeting. So thank you all my fellow speakers for taking care of the event. And yeah, when it comes to parenting, yeah, this is something that I seriously did not know I was so passionate about. When I look back on my journey now, I can understand that this is what I have always liked to work on. Like being a child, I was seeing my parents, both my parents leave me with some families and go off to work. I was feeling that kind of neglect, or I wanted to be with them, play around and things like that, but they were busy with their work. So when I look back and I see, I understand like what Smita mentioned, like the whole panel has mentioned so far. Smita, Vimla and Manisha ji have mentioned that your finances have to be right before you start your journey of a marital life. Even before you start your marriage journey, your mindset should be right, correct? And even before you give birth to a child, your mind should has to be right, and you should do all the required things which they have already taken care of. Now I'm taking the journey forward from there. So once it comes to parenting, we're like, it is like the lady will take off from work, or if she is working, it is natural. Everybody does that. Every second woman is doing that. So it is not a big deal. Like, it's like, going to a grocery store and buying groceries, not a big deal. Similarly, even parenting feels like or looks like, but it is not. It is like, I feel that the husband and wife, the father and the mother, they are like the parallel tracks of a parallel railway tracks. They have to be in synchrony. Both have to know what are their goals, what are they passionate for, what they want to do, and how they want to move forward. Usually what happens is we are busy focusing on the problems. We don't think of the solutions, or we first don't chalk out a plan like this is what we want to do, this is what we want our marriage to be, this is what we want our child to be, and this is how we are going to groom them. This is our set of values that we have, and these are the things that I look forward to, like how I will contribute to the family, how the husband contributes to the family, how they are going to bring up a child. There is no synchrony between that. So this is what is happening, and we are focusing mainly on the problems. The child is having some problem, the mother is having some problem, the father is having some problem. Everybody is busy in their world and they're lost, not connected. Another thing is we don't have a rule or a limit. Like, rules in the sense it is not to restrict anybody, but we need to know like, okay, fine, we sit together and talk to each other. So that can be like, yeah, mandatory kind of thing. So every evening, every night you sit together, you talk to each other, what is happening throughout your day. So each family member is aware of what the other person is going through, and they are connected. And even when the child is listening, the child would have had a day where he's played, he's fallen off, he's got into a tussle with somebody or had a very great time with somebody. So all those things, when you talk to each other, you know each other very well, you know the journey. You're not, at times what happens, the husband has started suddenly moving. The wife has taken off during pregnancy and bringing up the child in the initial years. The husband has been growing in his work and he is busy in his work, and the wife is busy with the child.
So their levels are on a different thing. We don't know what is happening here, and he does not know what is happening to the wife. And about the child, we are not aware at all, because the child is too small to be to speak up. So when we talk, when we communicate, I would say that is a very big thing. Like when we communicate, when we set the rules that every evening, every night we sit, we talk to each other, know how the day has been, how what we are looking forward to the next day, and the future of our journey. So all this will make a very big, it will build a very great foundation. So as you grow, a parent has to be like a lighthouse. Initially when the ship is being built, it is in the ship is built and taken, and then once you allow the ship to float, then it goes on it. So you don't anchor it. Only then it can float in any ocean. Like the Titanic, when it was built, it was taken care of in the yard when it was built. Then it was let loose. But then when some things went missing, they could not see and hit a iceberg, and it broke to pieces. Lost many lives. Our child is similar. When he is in the shipyard, when he is being built, those are the building years. He needs to be taken care of. He needs to be given things, made him understand the values, the beliefs, our system, everything has to be told. When we discuss this, all these things, the child will obviously learn from you. Where does he have to go? First is like first 3 years of his life, he's 24/7 with you at home. So he is learning from. And when he moves on, when he starts going to school, he's learning from his friends, he's learning from his teachers. So that is when the child starts learning from other sources. And then he is getting ready to take on the world. So when he is getting ready to take on the world, be there as a support, be there as a guide. He will model you. If you are watching TV till late night, or you are busy on your gadget till late night, and you tell the child, go and sleep at 9 o'clock, he is not going to do it. So he is going to imitate you. He will just follow what you are doing. You tell, stay away from mobile, don't play so much games. And you are always hooked to Facebook, Insta, you are on some social media doing or watching some Netflix. He is not going to follow, because you are sending confusing and different signals. So don't confuse the child. See, today the world is overloaded with information. The child has to pick what is good for me and bad for me. And when we keep sending confusing signals like this, the child being overloaded with information and the confusing signals gets stressed. And he is unable to. Nowadays, I am coming across children who are at the age of 10, they are stressed. For what reason? I know our childhood, we never worried even when we were 20. We were never called, there was nothing like stress in our lives even at the age of 20. And now at the age of 10, children are feeling stressed out. So we need to know where we stand and where we are taking our children, because they are role models. So let us be very clear what to look forward to. And I would say communication is the biggest. I would say the takeaway should be for you. Communication has to be the biggest thing. And when you communicate well, the whole family is like, together. They know the journey of each person, and you're moving forward. Like the parallel tracks of a parallel railway tracks. The train moves through. It can go from one point to another point without any hassle. There are many people who get in and get off in life, but the train can take the whole journey and reach till the destination. So be that, together as a unit, perform, and take your child to help your child to take that journey and reach the destination. So I think that is what I would say, that communicate very well, stay focused what you want from your life. It's not that you have to give up everything in your life, no, but communicate so that you can fulfill what your desires. Each one has the ability to fulfill their wants, but it is with communication. No war could have happened if we had communicated, be it any war. If the communication had taken place, be it at home or in the world, communication plays the part to bridge, to build families, to build countries and nations. So I would request you all that you already must be great communicators in the family, but yes, see to it if there's some missing link, fine tune it, and you will be great in your life. Thank you so much for having me. Thank you, Manisha ji. And I would request you all, there's a form, a Google form and a WhatsApp group link. Thank you, Bhairavi, for such wonderful words. Couple goals. She's saying that parenting is a couple thing. It's not for one person. Both need to communicate.
both need to be together as a couple. आप एक और एक दो नहीं है, आप एक और एक 11 बनिए अपने बच्चों के लिए, उनको सपोर्ट कीजिए, बी देयर फॉर ईच अदर ऑलवेज। ये बच्चे आप ही के हैं कि कहीं और से नहीं आए हैं, so you have to be there and you have to support. That is what Bhairavi wants to tell us. कि communicate कीजिए, support कीजिए, when the one person needs, the other person stands up कि yes, I'm there for you. So these are the couple goals which she wants to emphasize, and thank you so much Bhairavi for this wonderful information and guidance that you shared with us. Thank you. And now we have a wonderful young lady, and आप सुन के आपको मजा आ जाएगा, देखिएगा जरा. We are welcoming here Pihu Papia, and she's a student, coach and an author. उसकी सारी बातें स्टूडेंट की जर्नी को लेके है. She likes to talk about student, and वो अपनी मातृभाषा में बात करना पसंद करती हैं. She loves Hindi and she's going to speak in Hindi, and she's a life coach, an NLP expert और बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर है, वो आज आपको पता चल जाएगा. And she's an entrepreneur. And उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है जो आप सबको पढ़ने में मजा आएगा. The name of the book is रख हौसला. रख हौसला is a book for the students. And she wants कि हर student उसको पढ़े और समझे कि उसकी जर्नी क्या है. And it's the ultimate guide for the life transformation of students. उनकी बुक इसी को समझाती है. She's a founder of the mission रख हौसला to help people to get the best version of themselves and conquer their dreams and celebrate life every day. So here we have Pihu. Yes, Pihu. बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, बहुत बढ़िया संचालन. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सबको सुनकर. तो आज हम इस वुमेन्स डे पर मैं सबसे पहले सारी औरतें जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ कि आप अपनी जिंदगी में बहुत बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रही हैं. आज हमारा ये जो वर्कशॉप शुरू हुआ है ये एक ही पर्सन की मेहरबानी से है, और वो है हमारी प्यारी भैरवी जी, जिन्होंने हमें ये खूबसूरत मौका दिया है कि हम दिल खोल के आज अपनी बात इस प्लेटफॉर्म पर रख सकें. और सबसे शुरुआत से ही आज का वेबिनार बहुत ही बेहतरीन है. हमने जिंदगी के हर पड़ाव को सुना. सबसे शुरुआत किसने की? स्मिता जी ने, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में. तो स्मिता जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया. उसके बाद आई विमला जी. विमला जी ने हमें अपनी जिंदगी में शादी जो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है उसको अच्छी तरह से समझाया. और फिर आई प्रेगनेंसी की बात जो मनीषा जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया. भैरवी जी ने हमारी पेरेंटिंग की बहुत अच्छी सीख दी. और जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई है कि मैं बच्चों के बारे में बात करूं, क्योंकि जनरली जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले बच्चों के प्रोस्पेक्टिव को भी समझना जरूरी होता है. पेरेंट्स अपनी तरफ से समझते हैं, बच्चे अपनी तरह से ही बनते हैं, क्योंकि वो भी अपनी अलग अलग बिलीव लेकर आए हैं. हो सकता है वो कच्चे घड़े हैं, वो पेरेंट्स के थ्रू ही उनको शेप मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट उनमें भी कुछ एक हिडन टैलेंट होता है जो अपने साथ लेकर आते हैं. तो जब उनका वो टैलेंट और सही पेरेंटिंग के साथ मिलता है तो बच्चे बेहतरीन से बेहतरीन काम करते हैं. तो हो सकता है आज जो लोग देख रहे हैं ये वेबिनार और जो बाद में भी देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि अरे बहुत समय बीत चुका है, अब क्या बदलाव ला सकते हैं. लेकिन नहीं, जिंदगी हर पल आपको मौका देती है और जब जागे तभी सवेरा. तो इसीलिए आपको जिस वक्त जो लाइफ मिल रहा है उसी दम से आप शुरू कीजिए तो लाइफ बेहतरीन बनता है. तो लाइफ के किसी भी मोड़ पर, किसी भी उम्र पर वो चेंजेस लाए जा सकते हैं. तो आज मैं सबसे पहले बच्चों के द्वारा फेस की गई बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स का डिस्कस करूंगी, और उन प्रॉब्लम्स के डिस्कशन से ही आप समझेंगे क्यों वो इम्पोर्टेंट है, क्यों वो ज्यादा जरूरी है उन चीजों को बात करना. तो पहली आ जाती है एक्सपेक्टेशन की बात. हम लोग पेरेंट्स जो होते हैं ना, कभी कभी हमारे ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते तो हम बच्चों पर एक्सपेक्टेशन का बोझ लाद देते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे सपनों को पूरा करे. एक्सपेक्टेशन, अरे बच्चा ऐसा करना चाहिए, मार्क्स ज्यादा लाना चाहिए, क्लास में टॉप करना चाहिए. तो हम बच्चे पर वो टॉप करने का, एक्सीलेंट होने का, हर चीज में, चाहे स्टडीज हो, म्यूजिक हो, हर चीज में उसे एक्सपेक्टेशन बांधने लगते हैं कि वो बेहतरीन से बेहतरीन करे. तो ये जो दबाव होता है बचपन से ही उसके मन में बहुत गहरा असर करता है, जो बाद की जिंदगी में
उसको बहुत सारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कॉन्फिडेंस लेस हो जाना, बहुत सारी समस्याओं से उसको ग्रसित कर देता है, और जिसकी वजह से वो आने वाले साल में शायद वो बहुत और बेहतर कर सकता था, लेकिन वो कर नहीं पाता है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, उसको अपने जो भी उसका बेसिक हुनर है उसको सपोर्ट कीजिए, ताकि वो अपने हिस्से का जिंदगी जी सके। तो एक्सपेक्टेशन बस उससे ये कीजिए कि तुमको अच्छा करना है, तुम सीखो। अच्छा कैसे करना है? मार्क्स लाकर नहीं, अच्छा करना है सीख कर। जब बच्चे दिल से सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब वो खुद ब खुद बेहतरीन करेंगे, क्योंकि वो बेहतर करने के लिए ही इस दुनिया में आए हुए हैं। तो इसीलिए सबसे पहले एक्सपेक्टेशन करना उनसे बंद कर दीजिए, और उनको सपोर्ट कीजिए उनके ड्रीम्स को जानने के लिए, उनको सीखने के लिए, और उनके हुनर को खुद को पहचानने के लिए। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर हम जज करने लगते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? हमारे आसपास के लोगों को ही हम सही ढंग से नहीं पहचानते हैं, तो उनको हम जज करते रहते हैं। सोसाइटी ने ये हमारे चारों तरफ ये जजिंग का ये करके रखा है, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है, इससे तो हो ही नहीं पाएगा, तुम तो कर ही नहीं पाओगे। ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं अपने बच्चों को और अपने आसपास के लोगों को बोलते हैं, ये हमें बंद कर देना चाहिए बोलना। क्योंकि हर इंसान में काबिलियत है, सिर्फ उसे मौके और सही ट्रेनिंग और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अगर उसे वो मिल गया तो वो कमाल कर सकता है। तो इसीलिए जज करना बंद कर दीजिए कि तुमसे ये हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, एक ईयर लॉस हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आदमी सीखे तो सही, समझे तो सही, उसे वो सपोर्ट चाहिए, वो मेंटल सपोर्ट चाहिए। क्योंकि हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वो हमारे लिए एसेंशियल है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ एसेंशियल है। लेकिन हम मेंटल हेल्थ, दिमाग में क्या चल रहा है किसी के, वो कभी हम ना सोचते हैं, ना समझते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जैसे भैरवी जी ने कहा, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। विमला जी ने भी कहा कि बात करना जरूरी है, एक दूसरे से बात कीजिए, डिफरेंसेस को सॉल्व कीजिए, प्रोस्पेक्टिव को समझिए कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं किस नजरिए से सोचती हूँ, मेरा बच्चा किस नजरिए से सोचता है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कभी कभी, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वो मत छू, वो मत करो। ये जो ना का जो रिपीटेशन है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो उनके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। मेरे पास भी एक केस आया है जो इसी तरह से रिलेटेड है, कि छोटे से ही बच्चे को इतना ज्यादा टोका गया है, रोका टोका, ये मत करो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो शट डाउन कर देता है कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना। शायद उसमें कुछ इनोवेशन या क्रिएट करने की क्षमता थी, लेकिन वो टोटली शट हो गई है। तो इसी तरह से बच्चे को आप ना कहना बंद कर दीजिए, उसे केयर कीजिए, मगर ओवर प्रोटेक्टिव मत हो जाइए। इसके साथ आती है कि बच्चों को फेलियर्स का डर रहता है, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन करते हैं तो फेलियर का डर उनके दिमाग में आ जाता है, अरे मैं फेल हो जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। ऐसे करके वो फेलियर से बहुत ज्यादा डरने लगते हैं, उनको हैंडल करना, उनको सीखना आता नहीं है। और जैसे जैसे टीनेज आता है, उनमें ईगो बढ़ने लगता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ने लगता है कि मैं ऐसा हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये ऑलरेडी सोसाइटी में चल रहा होता है। तो फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा उनको घर कर जाता है उनके मन में। तो हमें चाहिए कि उनको हमेशा हौसला देते रहे कि कोई बात नहीं, आपको असफलता मिली है, आप फिर से शुरू कीजिए, अपने तरीके को बदलिए। क्योंकि हम लोग एनएलपी में हमेशा कहते हैं, देयर इज नो फेलियर, दिस इज ओनली अ फीडबैक। बिकॉज कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसा आपने किया है उसके अनुसार आपको एक फीडबैक मिला है, आप उसमें असफल हो गए। ये नहीं है कि आप अगर रास्ते बदल दोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो तरीका बदलिए, दूसरा किसी तरीके से अपना ये नजरिया बदलिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए बच्चे को हतोत्साहित ना करके हर चीज में हौसला बढ़ाने की जरूरत है, कि हौसला बढ़ेगा तो वो और ज्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, और फेल्योर के फियर को भी, अपने डर को भी हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि हमें पता है सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, करेज की जरूरत है। इसलिए मेरा बुक कहता है, रख हौसला। जब करेज होगा तो दुनिया का कोई भी चैलेंज हो, बच्चे खुशी से, क्योंकि उनमें वो नेचुरल एबिलिटी है,
उनकी नेचुरल एबिलिटी को खत्म मत कीजिए, उसको चेरिश कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए, उतना ही सिखाइए जितना कि वो अपने एबिलिटी के साथ आगे बढ़ सके। इसीलिए मौका दीजिए और वो जरूर हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि वो अभी आपके अंडर में है तो आप उसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन फ्यूचर में जब वो अकेले लाइफ की चैलेंजेस को फेस करेगा, जिंदगी की जंग लड़ने जाएगा, तो वो कैसे हैंडल करेगा? तब क्या हर मूवमेंट पे, हर एक कदम पर आप उसके साथ रहोगे? नहीं रह पाओगे। उसे तब हैंडल खुद करना पड़ेगा। तो उसकी नींव बचपन से ही डाली जाने की जरूरत है। और अपने ड्रीम्स उस पर मत थोपिए, उसे अपने ड्रीम्स को चेज करने दीजिए। अगर वो साइंस पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने दीजिए। अगर वो आर्ट्स में खूबसूरती पाता है तो उसे करने दीजिए। कॉमर्स में जाता है, करने दीजिए। उसे इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, उसे फोटोग्राफर बनना है तो बनने दीजिए ना। उसको अपने ड्रीम्स चुनने दीजिए, जीने दीजिए, क्योंकि ये उसकी जिंदगी है, हमारी जिंदगी नहीं है। हम अपनी जिंदगी जी चुके या जी रहे हैं, लेकिन उसे अपनी जिंदगी जीनी है, तो उसे अपने सपनों को जीने का और आगे बढ़ने का हक है। तो उससे वो हक मत छीनिए और अप्रिशिएट कीजिए। चाहे कोई भी सोसाइटी में आपके रिलेटिव, फैमिली जो कुछ भी बोल रहे हो, अपने जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, उसके साथ खड़े रहिए। यस, मेरे बच्चे ने ये कैरियर चुना है एंड आई सपोर्ट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। इस गर्व को फील कीजिए, चाहे वो छोटा से छोटा ही क्यों ना फील्ड चुने, बहुत बड़ा कुछ ना कर पाए, लेकिन उसी में गर्व महसूस कीजिए और उसे वो फील कराइए कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, मुझे गर्व है तुम पर और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मुझे फक्र है तुम पर। ये हमेशा हमें करना चाहिए उन प्रॉब्लम्स के थ्रू। दूसरी बात आ जाती है कि हमें एक्सेप्ट और बिलीव करवाना उनको सिखाना चाहिए, कि वो खुद को एक्सेप्ट करे, खुद को बिलीव करे। अपना जब आत्मविश्वास उनका बचपन से बढ़ेगा, तब वो दुनिया के तमाम चीजों को हासिल कर पाएंगे और तमाम चीजों में वो अपने आप को, हुनर को प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक्सेप्टेंस आए उनको अपने अंदर से, क्योंकि हमेशा होता है ना, कुछ बच्चे बहुत फैटी हो जाते हैं, वेट पुट ऑन कर लेते हैं, कुछ बच्चे अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि पैमाने गड़े हुए हैं सोसाइटी में कि ऐसे नहीं दिखोगे तो तुम बदसूरत हो, तुम्हारा स्किन डार्क है तो तुम्हारा स्किन हल्का है, तो ये है तो वो है, हर चीज में नुक्स निकालते रहती है ये सोसाइटी। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको उसके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है कि हाँ, तुम्हें दुबला होना है खूबसूरत दिखने के लिए नहीं, तुम्हें स्वस्थ रहने के लिए दुबला होना है। इस चीज का रियलाइजेशन होना जरूरी है कि गड़े हुए पैमानों पर नहीं, तुम खुद को एक्सेप्ट करो, कंफर्टेबल फील करो, विश्वास रहे, आत्मविश्वास रहे कि हाँ, मैं जो हूं, मैं खुश हूं, मैं वो हूं। उसका एहसास उसे हर पल दोहराए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि देयर इज नो फेल्यूर, ओनली फीडबैक। और हर बच्चा इस तरह से जब मजबूती से अपनी नींव को मजबूत रख के आगे बढ़ेगा, तो यकीनन वो अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएगा और वो अपनी डेस्टिनी अपने हाथों से लिख पाएगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक ट्रायंगल का कंप्लीट होना, क्योंकि एक स्टूडेंट सिर्फ अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके पेरेंट्स और टीचर भी साथ होते हैं। जब ये 3 ट्रायंगल कंप्लीट होता है, तभी एक स्टूडेंट मार्वलस कर सकता है अपनी जिंदगी में, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इस ट्रायंगल का ब्यूटीफुली कंप्लीट होना जरूरी है। जैसा कि भैरवी जी ने भी कहा, बच्चों को कंफ्यूज मत कीजिए, उन्हें खुला छोड़िए, उन्हें सपनों को पूरा करने के लिए उनके सपोर्ट बनिए, उनके रास्ते का हर्डल मत बनिए। बस ख्याल रखिए कि वे सुरक्षित रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उस ओवर प्रोटेक्टिवनेस के चक्कर में आप उनके ड्रीम्स को पूरा करने के पीछे ऑब्स्टेकल मत बनिए। ये मेरी हमेशा से सारे पेरेंट्स और सारे टीचर्स को गुजारिश होती है। और आज मैं इस वुमेन्स डे पर ये स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसा मैं कहती हूँ और मेरे बुक में भी मैंने लिखा है कि मैं अपने मरते दम तक एक स्टूडेंट रहना चाहती हूँ। तो सारे पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ, इवन सारे लोगों को, दुनिया के तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगी, डोंट स्टॉप लर्निंग।
लर्निंग इतना, नॉलेज इतना वास्ट है कि आपकी एक उम्र कम पड़ जाएगी उस सारे नॉलेज को एक्वायर करने में। तो इसीलिए कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। तब ये जो जनरेशन गैप का टैग हम लगाते हैं वो कभी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उनके प्रोस्पेक्टिव को समझते लगेंगे। जैसे आज हम 90s में के किड थे, तो उस समय क्या था कि जस्ट मैं अभी भी याद करती हूँ कि फर्स्ट ईयर जब मैं कॉलेज में थी तब इंटरनेट आया था, तब ये गूगल, तब सब कुछ नहीं था, हम सीख रहे थे ईमेल कैसे करना है, वी वर सो क्यूरियस, अरे नया कुछ आया सीखना है चलो करते हैं। और आज हम टच फोन्स हैंडल कर रहे हैं, और ये हमारे लिए एक सपने से लग, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आने वाले 30 सालों में हम लोग टच स्क्रीन वाला फोन यूज करेंगे, और शायद टेक्नोलॉजी और भी डेवलप करेगी। तो हमें सीखना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा हर जनरेशन के साथ, तभी हम बहुत अच्छी तरह से इस दुनिया को बना पाएंगे। तो कीप ऑन लर्निंग, डोंट स्टॉप लर्निंग एट ऑल। और बच्चों को सिखाना है कि तुम्हारा कंपटीटर कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा कंपटीटर तुम खुद हो। आज जो तुम हो, मैं आज भी ये करती हूँ कि आज मैं जो हूँ कल मैं वो नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं एक बेटर वर्जन क्रिएट कर रही हूँ अपना। तो आपका कंपटीटर आप खुद हैं, कोई दूसरे से आपको कंपीट करने की जरूरत नहीं है। यू आर द बेस्ट कंपटीटर ऑफ योरसेल्फ। तो इसीलिए खुद से चैलेंज कीजिए कि आज मैंने जो सीखा कल मैं इम्प्रूव करूंगी और ज्यादा बेहतर बनूंगी। इसलिए मैंने इस लॉकडाउन के 2 साल के टाइम को इस्तेमाल किया खुद को बेहतर बनाने के लिए और स्किल डेवलप करने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि बच्चे को भी अलग अलग लाइफ स्किल सिखाइए। स्विमिंग सिखाइए जो उसके लाइफ स्किल के लिए जरूरी है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कराटे सिखाइए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसको इंटरेस्ट है सिंगिंग डांसिंग में, जाने दीजिए, स्किल को डेवलप कराइए, बहुत जरूरी है। और एवरी डे 10 मिनट्स का मेडिटेशन करने दीजिए, ताकि उनके दिमाग शांत हो, सोचने की क्षमता उनमें बढ़े, क्योंकि जब वो सोचेंगे सही मार्ग से आगे बढ़ने की उनको जगह मिलेगी, रास्ता मिलेगा। तो इसलिए एवरी डे 10 मिनट्स का मेडिटेशन बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो और ज्यादा। और गोल सेटिंग जरूरी है। दिग्भ्रमित होकर बस चले जा रहे हैं, अरे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं। गोल सेट कीजिए कि मुझे क्या बनना है फ्यूचर में, क्या करना है, और उसके हिसाब से शॉर्ट गोल्स बनाते जाइए और उनको पूरा करते जाइए। तो बहुत जरूरी है गोल सेट करना। उसी तरह सेटिंग है जैसे हम लोग होमवर्क भी है, अरे मुझे समर वेकेशन में होमवर्क मिला है 5 सब्जेक्ट में इतने इतने हैं, तो मुझे समर वेकेशन भी इंजॉय करना है, अपना होमवर्क भी पूरा करना है। तो इस छोटे लेवल से शुरू कीजिए उनको। होमवर्क इन समर वेकेशन में डिवीजन कर दीजिए कि कैसे वो उन सारे समर वेकेशन को एंजॉय भी कर सके और डेली अपना होमवर्क करते हुए टाइमली कंप्लीट भी कर ले। एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है, कितने चैप्टर्स हैं पहले जान लीजिए, कितने दिन का टाइम है रिविजन करने के लिए, डिवाइड द चैप्टर्स इन दैट डेज, इन आवर्स, इन सेकेंड्स, इन मिनट्स। तो इस तरह से शॉर्ट गोल्स लेकर जब वो काम करेंगे अपनी जिंदगी के हर पल में, देन उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए जाइए, जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में और वो सारे मुकाम हासिल करे, वो सपने हासिल करे, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैं सब इसी के साथ अपना ये सोच, अपना ये मिशन आप लोगों को सौंप रही हूँ। होपफुली आपकी जिंदगी में भी वो बाहर आएगी, वो सपने आएंगे जिनका इंतजार आप सबको था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच पीहू जी। एंड जो बहुत खूबसूरती से आज सूत्रधार है हमारी उन्हीं को आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस। सुनीता जी, थैंक यू सो मच। You want me to start? Can you hear me now? Yes, yes. Okay. So Sunita ji herself is a life coach and NLP expert and a pranic healer. She's been an entrepreneur and an educator for over 28 years. ये खुद एक रेडियो प्रेजेंटर रह चुकी हैं, ऑथर हैं पेरेंटिंग द जॉय ऑफ डिस्कवरिंग वनसेल्फ। शी इज अ विपाशना प्रैक्टिशनर। उन्होंने इनर इंजीनियरिंग किया हुआ है
and she's a passionate Kathak dancer. So let's put our hands together for Sunita ji. Welcome. Welcome, ma'am. Thank you so much. Thank you for making me here, making me a part of this wonderful people and coaches. So on this Women Day, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जहाँ भी एक औरत होती है, wherever there is a woman, she beautifies things. घर सुंदर हो जाता है, जगह सुंदर हो जाती है, वातावरण अच्छा हो जाता है. She is a creator, she is a nurturer. हर जगह आप देखेंगे कहीं भी कोई छोटा सा झोपड़ा होगा, वहां पे एक लेडी होगी तो वो सामने सुंदर सुंदर सा लगने लगेगा. आपको देख के पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई औरत है, कोई फेमिनिन है, कोई एनर्जी यहाँ पे सुंदर सी है, एक बढ़िया सोल है, एक मतलब नेचुरली इंस्टिंक्टिव हम लोग जो है नर्चरर है हमारे अंदर. हम चाह के भी नहीं रोक सकते. हम ये हमारी इंटरनल फीलिंग्स है, हम बने ही इस तरीके से इननेट है. तो क्या होता है when we are such wonderful people and we love to give, हम अपने आप को ना रोक नहीं पाते हैं. कोई देखते हैं किसी को नीड है तो अपने आप आगे बढ़ के करते हैं. आगे इट्स वेरी नेचुरल फॉर अस, सब करते हैं. कोई एक या दो नहीं करते. जितने भी यहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज बैठी हुई हैं कहीं भी दुनिया में है, इट्स वेरी नेचुरल फॉर ऑल ऑफ अस टू डू दैट. और क्या होता है ये करते करते समटाइम्स जो हमारा ये ग्लास है, ये पूरा जो हम भर के लाए थे, पूरा प्यार से भरा हुआ था, ये खाली हो गया, कम हो गया इसमें प्यार. ये प्यार कम हो गया है, इसको हमें भरना है. दैट इज द टॉपिक ऑफ माइंड टुडे, सेल्फ लव. तो हम सबको तो प्यार देते हैं, सबको प्यार बांटते हैं, सबके लिए हमारे दिल में प्यार है, पर क्या अपने को हम प्यार करते हैं? कभी आपने सोचा कि मैं अपने को कितना प्यार कर रही हूँ? अरे मेरा बच्चा भूखा चला गया, यू आर वंडरिंग फॉर देम, मेरे हस्बैंड, माय बॉयफ्रेंड, मेरे स्पाउस, सबके लिए हम सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोच पाते, टाइम ही नहीं देते, सोचते ही नहीं है. So there has been a research, बहुत लोगों की रिसर्च में ये पता चला है कि when you are the age of 30 to 35 years, इस एज ग्रुप में जब आप होते हैं तो आपकी हैप्पीनेस, 80% of your happiness is based on the relationship. एंड जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप इज, सब लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स से, स्पाउस से, बच्चों से, ये फ्रेंड्स हैं हमारे रिलेशनशिप, सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट. बट क्या हम अपनी रिलेशनशिप खुद से बात करते हैं? डू वी नो वी हैव अ रिलेशनशिप विद सेल्फ? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हमारी जो असली रिलेशनशिप है वो सेल्फ से है. जो हमारी रिलेशनशिप सेल्फ से होगी, जो हम यहाँ से होंगे, वो हम अपनी दुनिया में बांटेंगे. जब हम भरे हुए हैं प्यार से तो हम प्यार बांट रहे हैं. अब हम थोड़े थोड़े खाली हो गए, हम चिड़चिड़े हो गए, हमको लगता है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है. दैट इज द टाइम टू रिफ्लेक्ट. वापस आ जाओ, थिंक अबाउट योरसेल्फ, क्या हो रहा है. एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जो कैपेसिटी ऑफ लव है, जो द कैपेसिटी ऑफ लव इज टू समवन इज द कैपेसिटी यू लव योरसेल्फ. आप खुद से कितना प्यार करते हो, उसी लेवल पे आप सबसे प्यार करोगे. सो अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कभी आ रहा है कि मुझे वहां से प्यार नहीं मिल रहा, यहाँ ये मुझे प्यार नहीं कर रहा, रिफ्लेक्ट, कम बैक, सोचो, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ. ओके, नाउ आई विल डू अ स्मॉल एक्सरसाइज विद यू, प्लीज बेयर विद मी. वैसे तो जब हमारी ये प्रोग्राम्स होते हैं हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, बट आज हम थोड़ा छोटा सा करेंगे, क्विक करेंगे. So please, can you all close your eyes? Thank you. Close your eyes and inhale deeply from your nose and exhale from your mouth, sorry. Inhale deeply from your nose and exhale slowly from your mouth. Inhale deeply from your nose and exhale slowly from your mouth. अब आप अपने आप को, अपनी एक पिक्चर को अपने मन में इमेजिन कीजिए. आप कैसे हो, अपने को इमेजिन कीजिए. आपने क्या कपड़े पहने हैं, आप कैसे लग रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, आप गुस्से में हो, आपने क्या पहना है, व्हाट इज योर फुटवेयर. आप इसको समझिए, अपने को देखने की कोशिश कीजिए. अब आप शाहरुख खान को देखिए. शाहरुख खान ने क्या पहना है, शाहरुख खान की क्या हेयर स्टाइल है, हाउ इज ही लुकिंग.
क्या वो स्माइल कर रहा है, क्या वो स्मार्टली खड़ा है? मेरे को सबके स्माइलिंग फेसेस दिख रहे हैं तो नाउ आई वुड वांट स्लोली टू कम आउट। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए किया। मैं ये सिर्फ एक्सरसाइज का ये मतलब है समझाने के लिए, मुझे नहीं मालूम, पर जहां तक मैंने आपसे अभी मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं बात करूं देखूं तो ज्यादातर ये होता है कि शाहरुख खान तो हमें बहुत बढ़िया दिख जाता है, जब अपनी इमेज की बात आती है बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के अपनी इमेज मिलती है या नहीं भी मिलती। सो दिस इज व्हाट वी आर, हम सारे दिन बाहर से जुड़े हुए हैं। वी आर फोकस्ड ऑन द आउटर वर्ल्ड, वी आर नॉट फोकस्ड इन द इनर वर्ल्ड। हम कैसे हैं, अपनी फोटो ढूंढने से भी नहीं मिलती है हमें दिमाग में, हम कैसे हैं। कोई एक पुरानी पिक्चर याद आती है, आज मैं जैसी हूँ मैं नहीं, मेरे को नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं है अपने आप से। सो वी हैव टू फील, डेवलप द कनेक्शन विद आवरसेल्व्स, जो हम आज हैं। और ये कैसे होएगा, हम अपने आप से कनेक्टेड कैसे करेंगे? वी हैव टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कीजिए कि क्या हो आप, जो मैं हूँ, मैं आज जैसी हूँ, मैं मोटी हूँ, मेरे बाल देखो सफेद हो रहे हैं, शायद थोड़ा सा फैट भी है, फैट थोड़ा नहीं काफी है, बट ये हूँ, मैं ही हूँ। दिस आर माय डिसीजंस। मैंने ही अपना टाइम एक्सरसाइज और योगा नहीं करके बच्चों को दिया, फैमिली को दिया, करियर को दिया, कुछ किया। दीज आर माय चॉइसेस। इन सबको हमें एक्सेप्ट करना है, इसमें हमें गुस्सा नहीं रहना है कि व्हाई डिड आई डू दैट। ये हमारी चॉइस थी, आई डिड इट फॉर माई सेल्फ, मैंने ही किया है। तो जब हम ये एक्सेप्टेंस फील करेंगे कि दिस इज द चॉइस आई हैव मेड, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनीबॉडी, किसी को ब्लेम नहीं जा रहा है, किसी को मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैंने अपनी मर्जी से किया, आई हैव डन इट। तो थोड़ा थोड़ा सा जो ये आपका ग्लास है ना, इसमें थोड़ा सा प्यार आएगा, देखना आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, थोड़ा बढ़ेगा ये, आपको गुस्सा कम होएगा, आप अपने को समझने लगोगे। ठीक है, तो दिस इज एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। और सिर्फ फिजिकल नहीं होती है सेल्फ, इमोशंस, जो गुस्सा भरा पड़ा है ना किसी के प्रति, उसको भी समझो, क्यों आया, क्या कर सकते हो आप उसका, इमोशनली कैसे हो, मेंटली कैसे फील करते हो, कितना गुस्सा रहते हो, अपने आप से गुस्सा होते हो, क्यों होते हो, क्या कम्युनिकेशन चल रही है अपने आप से, आर यू ऑलवेज टॉकिंग, वी ऑलवेज टॉक टू आवरसेल्व्स। आपकी छोटी छोटी आवाज अंदर चलती रहती है, यू नो, शायद मैं 10 किलो कम हो जाऊं, या मैं इतना इतना सा थोड़ी मेरी वेस्ट हो जाए, देन आई विल लव माई सेल्फ। ऐसे नहीं होता आप करीना कपूर बन के प्यार नहीं कर सकते अपने आप से, आपको अभी करना है अपने आप से। यू हैव टू एक्सेप्ट यू आर, ये आपकी जर्नी है, ये करीना कपूर की जर्नी नहीं है, दिस इज योर जर्नी, यू आर व्हाट यू आर। इसको आप समझिए, इसको आप बढ़िए आगे। जब आप अपने आप को समझ लेंगे, व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि हाँ भाई ये दिस इज मी, दिस इज आई एम, तो क्या होएगा, आपका कोई कंपैरिजन बंद, आप किसी से अपने आप को कंपेयर ही नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज योर जर्नी, योर चॉइस, योर लाइफ, योर डिसीजंस, योर फैमिली, यू, आपका है सब कुछ। तो आपकी कंपैरिजन फिनिश, यू नॉट गोइंग टू कंपेयर, एज पीहू जी जस्ट सेड, यू आर द कंपटीशन। आप एक बेटर हो सकते हो, अगर आपको लगता है यू वांट टू compete, compete with yourself। मैं कल ऐसी थी, आज मैं ऐसी, आज मैंने ये स्किल सीखी, ओनली विद योरसेल्फ, नो कंपटीशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अपने से करेंगे तो थोड़ा सा आपका ये क्लास और बढ़ सकता है, ठीक है फिर हमारे कंपैरिजन्स बंद हो गए तो क्या होता है कि हम अपने को रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे अपने लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना ध्यान रखना, किसी और की नहीं है। मैं इस दुनिया में आई हूँ, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माई बॉडी, माई इमोशंस, माई थॉट्स, मेरी सारी जर्नी, ग्रोथ जो भी है वो मैं हूँ, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, द मोमेंट यू फील यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, आप देखिए कि बहुत चेंज आने लगता है आपके अंदर। दिस इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी एल्स, इट हैज बीन माई जर्नी। एक टाइम था मुझे लगता था कोई मेरा ध्यान रखेगा, कोई और करेगा मेरे लिए, नहीं, ऐसे नहीं होता। द मोमेंट यू टुक चार्ज ऑफ इट, लाइफ ही चेंज हो जाती है, यू बिकम रिस्पॉन्सिबल। किसी को बोलना नहीं पड़ता अच्छा खाना खाओ, you know when you are responsible, your body is your responsibility, you eat healthy, you have a healthy lifestyles, अपने आप आ जाता है। बताने की, फोर्स करने की, डाइटिशियंस को परस्यू करने की, चीट करने की, there is no need। ये सारे वर्ड्स आते ही नहीं है आपके दिमाग में। You start to have a healthy lifestyle, it becomes very naturally।
मैं आपसे एक बात और बोलना चाहती हूँ कि नो नन ऑफ अस इज कंप्लीट हियर. हम लोग जितने भी हैं, ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स, ब्रेक हुए हैं, एंड देन वी अगेन स्टूड अप. सो ये जो ब्रेक होते हैं, जो हम गिरते हैं या कुछ हमें परेशानी आती है, ये ना जैसे हमारे आर्मी के ऑफिसर्स यहाँ मेडल्स लगाते हैं ना, दीज आर योर मेडल्स. आप इनको ना मेडल्स की तरह समझो. आप उनको आप उसको डिनाइल में या परेशानी में मत जाओ. दीज आर योर मेडल्स, अरे यू हैव अचीव्ड दिस. आप इसमें से निकल के आए हो, ब्रेक हुए हो, फिर खड़े हुए हो. So it's such a wonderful feeling. You honor your time, honor the experiences जो आपने इतने निकाले हैं, इतनी जिंदगी जो जी है, वो हर एक दिन आपने दिया है, टाइम दिया है, स्पेंड किया है, और वो उन सबको आप ऑनर करो. आपको ये नहीं फील होना चाहिए मैंने बर्बाद कर दिया. ये लैंग्वेज नहीं है. आपको आपने टाइम स्पेंड किया है ब्यूटिफुली विद समथिंग. तो आज आपको कर सकते हो, कल कर सकते हो. तो ऐसे धीरे 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 आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती रहती है अपने आप से. और जैसे जैसे आप अपने आप को समझते हो, अपने को खुद को जानते हो, अपने से कम्युनिकेशन होती है, कनेक्शन होता है, तो ये जो हमारा प्यार वाला ग्लास है, ये धीरे धीरे और बढ़ता है. फिर जब आपको ये सब आ जाता है, तो आपको समझ में आता है कि मैं सारी दुनिया से प्यार करती हूँ, मैं खुद इतनी अच्छी हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस, आई हैव डन सच वंडरफुल थिंग्स. अंदर प्यार आने लगता है अपने लिए. अपने लिए प्यार महसूस होता है, और आपको फिर ये फील होता है कि मैं तो अपनी फेवरेट हूँ. यू नो, आई एम द फेवरेट. मैं ही सबसे अच्छी हूँ, मैं फेवरेट हूँ, अपनी ही फेवरेट हूँ. या गीत का वो डायलॉग है ना मूवी का, कि मैं तो अपनी फेवरेट हूँ. तो दैट इज द फीलिंग यू स्टार्ट गेटिंग. और जब ये प्यार आपका भर जाता है, इसमें पूरा ये जब प्यार फ्लो होएगा ना आपका, ये भर गया कप, अब ये फ्लो होता है. तो जब ये फ्लो हो रहा है आपका प्यार, देखो ये बह रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एवरीबडी अराउंड यू वांट्स टू बी विद यू. इतना प्यार बांट रहे हो आप सब में, कि जो आप जिससे देख रहे थे कि ये मुझे प्यार नहीं कर रहा हूँ, वो कोई कुछ जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही प्यार भरा हुआ है. इतना प्यार है कि आपसे तो सब मिलना चाह रहे हैं. एवरीबडी वांट्स टू बी विद अ हैप्पी एंड लविंग पर्सन. हम भी चाहते हैं कि हम भैया किसी खुशमिजाज आदमी के साथ रहे, isn't it? So this is the love when it overflows. It's like a magic शो हो जाता है हमारी लाइफ में. एंड ये मैं कोई किताबों की बातें नहीं कह रही हूँ, ये एक्सपीरियंस करो, आप करके देख लीजिए. you will tell me कि ये देखो कितना बड़ा मैजिक हो गया है. पीपल अराउंड यू विल स्टार्ट सेइंग, कुछ तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं किया, आपने अपने से रिश्ता कायम किया है एक. अब मैं आपको एक छोटा सा वो दूंगी, एक हैक जैसे बोलती है स्मिता जी ने बताया था. सुबह उठ के क्या करना है इसको, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, जो भी आपके रूटीन है वो कर लीजिए. एंड देन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. जाओ शीशे के सामने, लुक इनटू आई, देखो उसको, शीशे को, अपने आप को देख के बोलो आई एम द बेस्ट. और हाई फाई करो अपने आप को. जैसे ही आप उसको हाई फाई ऐसे करोगे, मिरर भी आपको हाई फाई करेगा, एंड यू हैव अ कनेक्शन. आप करके तो देखिए इस मैजिक को, करके देखिए, एंड दिस मैजिक विल बिगिन. So let's the magic begin. Thank you friends for this. Thank you. Thank you so much, Sunita ji, for that overflowing love. And yes, it surely needs to be implemented in our lives also, and especially in my life. And I would like to thank all the speakers here for sharing such beautiful insights. And जितने भी participants हैं यहाँ पर, उन लोगों के लिए भी great thanks है. And yes, see, we have some exclusive bonus for you people who have been hanging on till the end. Whoever are joining in the WhatsApp group, they will be getting an ebook from one of our authors. So that is an extra bonus on Women's Day that we are giving out. So thank you all for staying back till the end, and thank you, Sunita ji, for that overflowing love. And thanks again to all the speakers. Thank you so much. And if you all can put on the cameras, I think we can have a good picture. Can one of you from the, yes, whoever is on the laptop or computer, please take a good picture.
And today, this is what we say, that, the karma knows how to take you forward. So this was all supposed to be starting from my computer and doing it from my computer and things like that. And it's not happened since 3 years, losing electricity. And today we have had a breakdown, and there were 3 power cuts in this 1 hour. So, nature knows how to take turn and when to hand over to others. When things have to happen for the good, nature knows when to give power to others. So just move on with the flow like we all did. So a very happy Women's Day to all, and looking forward to connecting with you all in future webinars also. Thank you so much.